बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो सरवत इस्लाम का है। और ये लेक्चर इंग्लिश रिकमेंड हुई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। हाईएस्ट इंटरव्यू स्कोर जो मिला है लोगों को 84। शी हैज स्कोर्ड 84 मार्क्स इन द इंटरव्यू। और इस नंबरों से हमें इनकी मेहनत के बारे में अंदाजा होता है कि कितनी इन्होंने स्ट्रगल की होगी, कितना हार्ड वर्क इन्होंने किया होगा। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी इस मेहनत के पीछे, कामयाबी के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम सरवत, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? Walaikum Assalam. I'm perfectly fine, sir. How are you? आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 84 मार्क्स आपने लिए और रिजल्ट आने से पहले ही जो मेरी आपसे डिस्कशन होती थी, आई वॉज वेरी होपफुल फॉर यू। डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. I literally remember your kind words. Like I was preparing it just after my written exam. After my written exam, I started preparing myself for the interview, but I needed some mentor to guide me well. And I also had fear of failure, fear of my low academics too. So after suggestion of some of my friends, I contacted you just towards the very close of my interview. ठीक हो So गया। you took my first mock interview, and I still remember your kind words when you said that, sir, but if luck favors you, you are a lecturer. So these very words proved prophetic, and luckily I became a lecturer along with securing Alhamdulillah the highest marks in PPSC. Alhamdulillah. Okay, good. That's very inspirational and motivational for a lot of people who just for the fear of fear, just for the fear of failure, stop working or stop preparing for any kind of competitive exam. मुझे एक और बात बताएं कि प्रीवियस आपने इंटरव्यू दिया, इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, राइट? Yes, sir. It was my second attempt. सेकंड अटेम्प्ट। प्रीवियसली यू आल्सो पास द इंटरव्यू, दैट्स करेक्ट? Yes, sir. कितना Yes, स्कोर sir. था आपका प्रीवियसली आपका? Sir, at the time, I was not well prepared for my interview. Perhaps I took it interview for granted. ओके, और तब मेरे आई थिंक 60s में थे, मोस्ट प्रोबेबली 64 66 इतने ही थे। ठीक हो गया। तो आप कंपैरिजन करें अगर उस इंटरव्यू को इस इंटरव्यू से, कोई जमीन आसमान का कोई फर्क नजर आता है आपकी परफॉर्मेंस में? Sir, I put in more efforts this time ओके। because I didn't want to be rejected this time. I had a horrible experience of being slow. लेकिन Like आप I ये used to समझ think रही हैं that कि I have जी, qualified my written. ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मुझे फील होता था कि मैंने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटर्न में मुझे फील होता था कि अच्छा स्कोर है एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू टेल दैट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड हायर मार्क्स इन रिटन एग्जाम देन आई हैव नाउ इन माय सेकंड अटेम्प्ट सो आई यूज्ड टू थिंक दैट आई कैन इजीली manage my interview too though that interview also went very smooth but the marks they gave me they were only in 6 days and this time I struggled really hard and yes there is a lot of difference between the preparation of written and interview in the ठीक। written you can cram the things you can be objective, like you can cram MCQs and objective sort of material. But for getting good marks in your interview, you need to have a thorough preparation of all the subjective content too. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं एकेडमिक्स आपका कितना है? Sir, it's too low. Though I had been a good student, लेकिन बहुत लो है क्योंकि मेरा एनुअल में ही एनुअल सिस्टम है ना मेरा फ्रॉम 24 पंजाब पॉइंट समथिंग है, यूनिवर्सिटी 24 पॉइंट समथिंग है। 24.21. 24.21. Also, being a private candidate and from annual system too, and from Punjab University, these are the biggest flaws of all those candidates who come from that system. और उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि भाई दे हैव टू compete with the candidates who have come through the BS system. तो एक ये बड़ा एक प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप भी इस विक्टिम का शिकार आप होने से डरती थी? Yes, sir. I was too afraid of my low academics marks. ठीक हो गया। आपके रिटर्न में स्कोर कितने हैं? 50.75. 50.75 और 24.21 आपके एकेडमिक्स और 84 आपका इंटरव्यू। मुझे एक बात बताइए कि रिटर्न की तैयारी में क्या स्टडी का पैटर्न था, कैसे स्टडी किया आपने, उसके बारे में जरा बताएं, रिटर्न टेस्ट के बारे में। Sir, written be subjective studies थी written की भी. ठीक है। Like I didn't go for in the very beginning I didn't go for the MCQs books. ठीक I है। revised my whole syllabus. Luckily, I got some really good friends, and we used to discuss the things with one another. We used to decide the task. We used to decide the topics, and then we used to prepare it for the whole day. I was also having a job, and after returning from that job, I had to prepare it all. और उसमें भी हमारी प्रिपरेशन सब्जेक्टिव रही है बाय द क्लोज ऑफ द रिटन टेस्ट व्हेन द डेट अनाउंस्ड और आई कैन से when we were expecting that a date is about to be announced then I bought 2 3 MCQs books but they did not prove really helpful. ठीक है। इसमें यही है कि जो आपकी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन होती है ना इट हेल्प्स यू ग्रेटली इन द सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट. प्लस वो जो आप यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस रिवाइज करें या फिर ऑल ओवर द यूनिवर्सिटी दैट आर इन पंजाब उनको रिवाइज कर लें, तो दैट आर आल्सो हेल्पफुल। यस सर. ठीक हो गया। जॉब के साथ पढ़ना कैसा है, बताएं जरा इसके बारे में। Well, it's too difficult.
but one has to manage. ओके, क्या मोटिवेशन थी आपके पास जॉब के साथ पढ़ने की? क्या आपको मुश्किल आई हुई थी कि जॉब भी है ऑलरेडी? अक्सर लोग कहते हैं जॉब मिल तो गई है, क्या जरूरत है धक्के खाने की, क्या जरूरत है पढ़ने की? क्योंकि पढ़ना एक सर, इट बेसिकली एक मेंटल स्ट्रगल है पढ़ना। तो इट indeed. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल एबिलिटी। और आप कहते हो यार पता नहीं क्या है, बहुत मोटिवेशन चाहिए। आपने कैसे मोटिवेशन ली? Sir, I developed an year of positive competition. Like many of my friends got selected in their first attempt in 2020. ठीक है। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि शायद perhaps I would like to say कि मैं शायद तब इतनी सीरियस नहीं थी. So ठीक है। then I realized that I am in semi-government institute and all of them are having privileges of being a government employee and all that. Then I found that then I struggled and ओके। then finally ओके ठीक है, got government job. ये आपने मोटिवेशन ली। आप अक्सर लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ा कितने घंटे। मेरे ख्याल में ये और उसकी ये स्टडी ये पैटर्न से निकल जाना चाहिए लोगों का, बिकॉज आवर्स डू नॉट मैटर। इट इज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट दैट यू स्टडी इज एक्चुअली मैटर्स। ऐसे ही है। Yes, sir, of course. When you are satisfied with your preparation, then all is done. Then hours do not matter at all. आपको ठीक हो गया। satisfaction चाहिए होती है. सही है। इंटरव्यू आपने जो दिया, इंटरव्यू आप देकर आई, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी इंटरव्यू में? मतलब यू आर वेरी फ्लुएंट एंड वी टॉक्ड आफ्टर योर इंटरव्यू in detail, and I was very happy and satisfied with your performance, and even I predicted about your selection too. But what were your views according to you after the interview? क्या भाई क्या फीलिंग्स आ रही थी वो बताएं जरा। So the very first vibes I got, they were of satisfaction. Okay, good. Like I thought that I have justified everything they asked. But after some time, I have a cryptic mind. I used to think that this question's answer might have been better answered in this way. इसको मैं इस तरीके से आंसर करती तो बेहतर होता. And then I used to have vibes that perhaps they may fail me in the interview. So, but by the end, all is well that ends वो well. डाउट्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डाउट्स कम एंड गो, वो तो आते ही आते हैं डेफिनेटली। अब आपका जरा इंटरव्यू का एक जरा तजिया कर लेते हैं। आपके सामने हमारे पास इंटरव्यू आ रहा है। लिटरेचर के सवालात उन्होंने आपसे पूछे, और क्रिटिकल सवालात पूछे, क्या पढ़ा, और क्या आप वेल प्रिपेयर्ड थी इन सवालों के मुतालिक, या आप कुछ हिचकिचाहट हुई है, कुछ ऐसा था जो ना पढ़ा वो? डीएच लॉरेंस के बारे में पढ़ा आपसे, Straight और उनकी पोइट्री के बारे में भी पूछा, पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स के बारे में भी पूछा। तो आप वेल प्रिपेयर्ड थी? Sir, I didn't revise D.H. Lawrence well because his books were not part of my syllabus. So I used to think that he's only a minor writer. But very first question was asked from me was about D.H. Lawrence, and I realized that he was not such a minor writer. तो ओके। मैंने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया था. In spite of that, I tried to answer. She at once questioned me about the works that I have read of T.H. Lawrence, the poems that I have read. Luckily, I remembered a few works जो अपन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़े हुए थे. Then she asked one very difficult question कि what was the religion that D.H. Lawrence had, and it clicked because of my subjective preparation that religion of blood. He believed in art for my own sake. This was a quotation that I had read somewhere, but at once it came in my mind. I told her. तो फिर उसने फिर यहीं से आगे फिर क्वेश्चंस निकालती गई थी, फिर पूछती गई थी. ठीक हो गया। अच्छा, आप पोइट्री भी लिखती हैं, शायरी भी करती हैं, उर्दू और अंग्रेजी दोनों ही जुबानों में करती हैं? Yes, sir, but most often in English. इन इंग्लिश। क्या आपको लगता है कि आपकी पोइट्री ने उनको इन्फ्लुएंस किया होगा? आप कुछ पोइट्री की कुछ लेके गई थी, पीसेस वगैरह कुछ लेके गई थी, पोइम्स अपनी कुछ प्रिंट करवा के उनके पास? I didn't. By the end, the chairman asked about hobbies. तो हॉबीज में फिर मैंने बताया था कि मैं पोएट्री भी लिखती हूँ. तो अच्छा। then he said, कुछ हमें भी सुना दें अपना लिखा हुआ. Then I recited my own poem. He So looked very much gratified. definitely, it must have improved your overall performance. Okay, besides writing a poetry, besides writing poems, you have a keen interest in joining this profession, and not just interest, but profound knowledge to join and make a good performance. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोगों को प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन स्किल्स में, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? Sir, they should practice as much as possible. Okay. What was your strategy in practicing English language? Because many people go and join some kind of institutes, and still even they end up speaking no word, or they make a lot of mistakes. So what was your strategy, and how would you like to give a suggestion to everyone who wants to improve? Then, sir, they should listen to match commentaries.
They can watch English movies, and practice is must. Practice is must. Okay, watch commentaries, watch podcasts, आप video practice करते हैं lectures, तो जब discuss, आप talk, try to answer questions. So these are the various kind of strategies that do you recommend. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, मुझे दिए, हार्डली मेरे ख्याल में 3 मॉक इंटरव्यूज हुए थे हमारे, और आपका इंटरव्यू प्लान हो गया था। और तो क्या मॉक इंटरव्यूज का फायदा हुआ था आपको? Yes, sir. They benefited me a lot. I learned that how to answer well and how to attract the listener with your good answers. नॉलेज तो होता है सबके पास, लेकिन एक अच्छी बिगनिंग करके आप किसी इंटरव्यूअर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड देन हाउ कैन यू मेक हिम और हर रियलाइज दैट यू आर द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. तो आई रियली लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम यू. ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपने जब मुझे ज्वाइन किया, डेफिनेटली एक बंदा स्केप्टिक होता है, ज्वाइन करे ना करे, पता नहीं टाइम जाया होगा, और कुछ लोग तो मतलब इवन इफ आई पुट माई सेल्फ एट दैट स्टेटस कि भाई अगर मुझे कोई कहे तो डेफिनेटली मुझे भी डाउट होगा, कि मुझे भी डाउट था कि पता नहीं मेरी एबिलिटीज कहीं अंडरमाइन ना हो जाए, या मैं कॉन्फिडेंस ना लूज कर जाऊं। तो ये कि कुछ फीलिंग्स थी आपको मुझे ज्वाइन करने से पहले कि पता नहीं क्या होगा, या हो सकता है मॉक इंटरव्यू अच्छा ना हो, तो आगे से जो मेंटर है वो कोई बात कह दे तो बंदा का वैसे ही कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, कुछ थी आपकी ऐसी फीलिंग्स? Sir, of course, you are such a knowledgeable person, mashallah. And I was always afraid of joining you. Then my friend pushed me greatly. उसने मुझे बहुत कहा कि तुम, if Sir Shahid says you okay, or if he shows satisfaction from your preparation, then all is done. Then you don't need to worry at all. So after my first mock interview, I was encouraged to such an extent that I performed well in my interview. तो ऐसा था कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए ज्वाइन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे ये था कि आई एम ऑलरेडी इन फियर, इन डाउट्स. तो ठीक अगर है, आपने कोई ऐसा कमेंट कर दिया तो वो फिर बंदे तो. का वैसे ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नेचुरल। और फिर आपने डिसाइड किया मुझे ज्वाइन करने का, कुछ आपको फायदा हुआ मतलब, क्योंकि आपने रिटर्न खुद माशाल्लाह से तैयारी करके पास किया, और अब इंटरव्यू के लिए आपको लगा कि भी एक मेंटर की जरूरत होनी चाहिए, ऑल्दो के आई डिड नॉट कंपेल यू, यू केम फॉर द मॉक इंटरव्यू एंड आई अप्रिशिएटेड योर परफॉर्मेंस, मैंने नहीं कहा आपको, लेकिन देन यू डिसाइडेड टू ज्वाइन मी। क्या फर्क देखा आपने ज्वाइन करने के बाद? जस्ट गाइडलाइन तो यूट्यूब पे भी मिल जाती है, इसके अलावा आपको क्या फायदा हुआ? Sir, you have a whole digital library, and almost I can say that every sort of question is available there in इंटरव्यू its क्वेश्चन audio आंसर form, सीरीज है। in video form. So जो आपकी digital library है, it helps a great deal. So I would like to suggest for all the aspirants that they must get benefit from all these services. You need to only digest the thing, the ready-made things. You need to just digest them, just to read them carefully, learn them, memorize them. तो एक बहुत सारा जो ऑडियंस है, बहुत सारा टाइम जो कि रिसर्च में जाता है, वो आप किसी प्रोडक्टिव काम में, वो आप उनकी लर्निंग में उसको कंज्यूम कर सकते हैं. कंज्यूम कर सकते हैं वो डेफिनेटली, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज है, और वैरायटी डाइवर्सिटी है उसमें, ये नहीं है कि चंद लिमिटेड सवाल दे दिए गए और उसको कर, बल्कि उसमें डाइवर्सिटी है, मल्टीप्लिसिटी है, कितनी तरह से आप उनको पढ़ सकते हैं, इवन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था? लिंग्विस्टिक्स को कैसे तैयार किया आपने, अगर पूछ लेते फर्ज करें तो फिर क्या करती हैं आप? I opted linguistics in my MA. It ठीक was है, only of 100 marks. I was not much good in linguistics. लेकिन फिर जब उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे ना रिटर्न की, तो then I consulted two books for linguistics, and then I thought that my linguistics is done. So अगर वो कोई क्वेश्चन कर दे तो I think that मेरे आप से आंसर आंसर हो कर जाना था. आप आंसर कर लेती हैं, ठीक है। पहली अटेम्प्ट में नाकामी के बाद पूरे 2 साल का गैप और दोबारा से अपेयर होना, ये खौफ तो होता होगा, कोई टेंशन तो होती होगी, कि बस आप हैप्पी थी इस पीरियड के दौरान? To that, fear of failure was always there. ऑलवेज देयर। But after my first attempt, I did not leave preparation. I continued my preparation. I remember the result, first attempt's result was, final result was announced on August 2020. And in September, I was again all set to prepare myself. In December, the jobs were announced. We got almost 6 months for preparation. And in those 6 months, there was not even any single day when I left my preparation. I was preparing some authors, some topics on daily basis, along with my friends. So these things matter a lot. You need to be well prepared beforehand, in spite of waiting for the jobs to come. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एडवर्टीजमेंट टू बी अनाउंस्ड, क्योंकि जैसे एमए करता है बंदा तो 2 साल पढ़ता है, सो हाउ कम वी कैन इमेजिन दैट आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग वंस द जॉब्स विल बी अनाउंस्ड? सो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आप भी यही कहना चाहती हैं कि वन शुड हैव इन हिज माइंड दैट स्टार्ट प्रिपरेशन इमीडिएटली, और इन सारी चीजों को जहन में रख के जो है ना वो तैयारी करनी चाहिए, ऐसे ही है? Yes, sir. मुझे One एक must be बात, prepared, ठीक है, well मुझे एक बात, prepared. ठीक हो गया, मुझे एक बात बताइए कि यू आर ऑलरेडी डूइंग अ जॉब एट सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, और आपने कोई और प्रोफेशन के बारे में नहीं सोचा? व्हाई नॉट थिंक अबाउट एनी अदर प्रोफेशन, एनी अपेयरिंग इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? No, sir.
lectureship is far better because I find peace only in this profession, in teaching profession. It's closer to my heart. It's closer to your heart. One So can grow in professional way. In There's a lot of personal development also. तो mental peace भी साथ में, और फिर the happiness you see at the children's face, at your students face when they achieve their targets, तो वो बड़ी immense होती है, सही है, वो motivation बड़ी ज्यादा yes, होती है, सही है। of course, sir. सही So सही सही। कोई मैसेज देना चाहें आप ऐसे लोगों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं, रह गए हैं, दोबारा कलम उठाना चाहते हैं, दोबारा पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? sir, message is only one that be motivated, be dedicated, be committed to the task. You need to be consistent to the maximum possible extent because people only come to encourage by the end when you achieve your goal or to offer some condolences. The path between these two is only yours and yours alone. So beware Thank of those people who say that PPSC is all about rishwat, siparish, and all that. It is all about hard work and the डेडिकेशन। devotion that ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एमफिल का कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी एजुकेशन, आप एमफिल कंटिन्यू है आपका, और तो एम क्या उसकी कोई इफेक्ट है कि डिग्री का एमफिल का? I don't think that it affects much. Like I was in my first semester when written test was held. ओके। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज्यादा वो इतनी इफेक्ट हुआ था उसका सेकंड था जब इंटरव्यू हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है एमफिल की रादर आई आई हैड फिक्स्ड इट दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट आई एम परसुइंग माय एमफिल ठीक so हो that गया। they may not ask any question from MPhil. ठीक होगी डेफिनेटली। इफ योर डिग्री इज नॉट कंप्लीट, यू आर नॉट सपोज टू से दैट यू आर डूइंग एमफिल। वन शुड टेल द थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स। Even somebody says that he is pursuing MPhil, that's still not completed. लास्ट मेरा सवाल ये है कि अक्सर लोग एमए के बाद या बीएस के बाद ये अज्यूम कर लेते हैं कि भी हमने तो पूरा पढ़ा हुआ है सिलेबस को, एंड देन दे इमीडिएटली गो एंड अपेयर इन द एग्जामिनेशन एंड इवेंचुअली फेल। उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी? सर उन्होंने तो बस अपना सिलेबस ही पढ़ा होता है ना and it doesn't matter कि how much well they have prepared only their own university syllabus. So what जी। about the rest of the other universities and literary topics? और ये तो I would say कि gross absurdity है कि you consider yourself all in all. You need to be well prepared. I वेल again प्रिपेयर। and again say well prepared means well prepared कि आप you are going to appear in a competitive exam where you have to compete more than 10,000, 20,000 people. So you have to show your real potential in order to get this job. ठीक 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 ठीक। और थैंक यू वेरी मच सरवत इस्लाम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप के लिए मैं दुआगो हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आगे भी आसानियां पैदा करे और आपको मुस्तकबिल में भी बहुत कामयाबी मिले। आपके व्यूज से वो तमाम लोगों को मोटिवेशन मिले जो पढ़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं या किसी भी अपने उस्ताद के पास पढ़ना चाहते हैं, वो तमाम लोग मोटिवेशन के साथ पढ़ें, डेडिकेशन के साथ पढ़ें, और जो है वो किसी भी तरीके से मायूसी को साथ न लगने दें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir.